दो तरह के लोग हैं जिनको रिटर्न किया जा रहा है। एक वो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना अफ़गान डॉक्यूमेंट है ना पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है, दे आर इलीगल इन पाकिस्तान, तो उनको रिटर्न किया जा रहा है अंडर दिस पॉलिसी। सेकेंड आर फॉर द फर्स्ट टाइम अफ़गान सिटीज़न कार्ड, जिसको हम ACC कार्ड कहते हैं। ACC जो है अफ़गानिस्तान सिटीज़न कार्ड, वो जो होल्डर्स हैं उनको भी रिटर्न किया जा रहा है। और उस वक्त जो डिपोर्टेशन हुई उनकी तादाद तकरीबन 8,42,000 के करीब है। सो मोर देन 800,000 वर रिटर्न एट दैट टाइम। अब एक्सपेक्टेड ये है कि 9 लाख के करीब मजीद रिटर्न हो जाएंगे। सो दैट वुड बी रिड्यूस्ड, that will significantly reduce the burden of Afghan refugees in Pakistan. Many of those migrants have lived for generations in Pakistan. At least this is the third generation which are living in Pakistan. And therefore, and many of those are the people who have not been to Afghanistan throughout their life. They are born in Pakistan, they are raised in Pakistan, and they have businesses in Pakistan, they have jobs, they have social connections, they have even marriages in Pakistan. Therefore, उनको रिटर्न करने का मकसद ये होगा दैट दे आर पुश टू द एलियन टेरिटरी फॉर देम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में जो अफ़गानिस्तान से आए हुए जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी रिटर्न के हवाले से जो पाकिस्तानी स्टेट की पॉलिसी है और जो डेडलाइन अनाउंस की गई थी उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम प्राइमरली 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये रेफ्यूजीज़ को रिटर्न करने के ऑर्डर का बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ हाउ मेनी रेफ्यूजीज़ आर देयर इन पाकिस्तान, कौन से लोग रिटर्न किए जा रहे हैं, क्या सारे अफ़गान्स को रिटर्न किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसकी बेसिक डिटेल देखेंगे। एंड देन प्राइमरली वी विल फोकस ऑन द प्रोज एंड कॉन्स, दोज हु सपोर्ट गवर्नमेंट मूव, उसकी बात करेंगे। गवर्नमेंट का रैशनल देखेंगे, उसके जो सपोर्टर्स हैं, बैकर्स हैं इस मूव के, उनका रैशनल देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं, या दोज हु आर नॉट अलाइनिंग विद द स्टेट पॉलिसी ऑन forceful return of the refugees, वो क्या कहते हैं, उनका क्या आर्गूमेंट है, and then we will conclude the entire discussion. But नाज़रीन, before I go on to explain, आपको स्क्रीन पे नज़र होगा because after a few days there will be a course on current affairs and Pakistan affairs. 2 सब्जेक्ट जो हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट जो हैं, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, CSS के वाले से भी और PMS के वाले से भी, दिल बी टॉट ऑनलाइन थ्रू दिस लिंक, जिसकी डिटेल जो है वो आपको गिवन नंबर्स पे आपको मिल जाएंगी। Besides that, for the first time, political science batch is also being offered. That would cover all the CSS and the PMS exam related topics. और ये जो political science है ये भी कोर्स ऑनलाइन होगा, and it's a good opportunity for those who are interested in upcoming CSS as well as PMS, because these courses will cover around at least 400 marks for your CSS as well as the PMS course. For more details, you can contact on the given numbers. अब नाज़रीन, इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। ये जो पाकिस्तान की स्टेट है, उन्होंने अनाउंस किया इन द अर्ली डेज ऑफ मार्च दैट बाय 31st of March ऑल द अफ़गान रेफ्यूजीज़, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल रेफ्यूजीज़ हैं, दे मस्ट वॉलंटरली रिटर्न बैक बाय द लास्ट टाइम ऑफ 31st of March, and if they don't, from the 1st of April there will be a policy of deportation of those refugees back to Afghanistan. नाज़रीन, वो डेट हमने देखा कि गुजर गई। 31st March वॉज द डेट, बट ईद का दिन था। उसके बाद हमने ग्रेजुअली देखा कि कल से जो है वो एक डिपोर्टेशन जो है वो शुरू हुई है। उससे पहले बहुत कम लोग थे जो वॉलंटरली रिटर्न हुए, वापस अफगानिस्तान गए। अब जो स्टेट है दैट विल बी फोर्सिंग और फोकसिंग ऑन डिपोर्टेशन, और उसके लिए मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स भी बनाई गई हैं बॉर्डर के पास, ताकि विद होल्डिंग किस्म के एक कैंप्स बनाए गए हैं ताकि पूरे पाकिस्तान से उन माइग्रेंट्स को वहाँ लेके जाया जाए और वहाँ विद होल्ड करके फिर वहाँ से ग्रेजुअली जो है वो रिटर्न किया जाए बैक टू अफगानिस्तान। बट क्या सारे अफ़गान्स को रिटर्न किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। 2 तरह के लोग हैं जिनको रिटर्न किया जा रहा है। एक वो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना अफ़गान डॉक्यूमेंट है ना पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है, दे आर इलीगल इन पाकिस्तान, तो उनको रिटर्न किया जा रहा है अंडर दिस पॉलिसी। सेकेंड आर फॉर द फर्स्ट टाइम अफ़गान सिटीज़न कार्ड, जिसको हम ACC कार्ड कहते हैं, ACC जो है अफ़गानिस्तान सिटीज़न कार्ड,
वो जो होल्डर्स हैं उनको भी रिटर्न किया जा रहा है। अब ACC के लोग कौन से हैं? दीज आर द पीपल हु आर हैविंग अफगान रेजिडेंसी कार्ड बट दे आर हेयर इन पाकिस्तान फॉर शेल्टर, और पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली उनको शेल्टर का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया, एंड वो लोग भी रिटर्न किए जा रहे हैं। यानी उनके पास डॉक्यूमेंट ज़रूर है बट अफगानिस्तान का डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट नहीं है। और दो जिनके पास ना अफगानिस्तान का है ना पाकिस्तान का है, टोटली अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको भी रिटर्न किया जा रहा है। तो ये दो तरह के लोग हैं जिनको इस फेज़ में रिटर्न किया जा रहा है। और इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स तकरीबन जो एक्सपर्ट्स हैं और UNHCR है उसके नज़दीक तकरीबन इस कैटेगरी में जो इलीगल हैं और जो अफगान रेजिडेंसी कार्ड रखते हैं, अफगान सिटीजन कार्ड रखते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 9 लाख के करीब है। सो तकरीबन 9 लाख के करीब जो लोग हैं उनको रिटर्न किया जाएगा बैक टू अफगानिस्तान अंडर दिस पॉलिसी जो कि अनाउंस की गई रिसेंटली। इससे पहले नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले 2023 में भी बाय द एंड ऑफ 2023 पाकिस्तानी स्टेट लॉन्च्ड अ पॉलिसी टू रिटर्न द इलीगल माइग्रेंट्स एट दैट टाइम, और उस वक्त भी पहले उनको वॉलंटरली टाइम दिया गया था बट देन अल्टीमेटली दे वर फोर्स्ड टू बी डिपोर्टेड, और उस वक्त जो डिपोर्टेशन हुई उनकी तादाद तकरीबन 8,42,000 के करीब है। सो मोर देन 800,000 वर रिटर्न एट दैट टाइम। अब एक्सपेक्टेड ये है कि 9 लाख के करीब मजीद रिटर्न हो जाएंगे। सो दैट वुड बी रिड्यूस्ड, दैट वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बर्डन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज इन पाकिस्तान। अब नाज़रीन इस पॉइंट की बात आते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, रैशनल क्या है गवर्नमेंट का, उसके जो सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, वाई इट इज़ नेसेसरी, द गवर्नमेंट हाउ इट जस्टिफाइज इट, इसके ऊपर बात करते हैं। देयर आर मल्टीपल एक्सप्लेनेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ तो वही पुरानी है जिस तरीके से हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जब 2023 में जब ये रिटर्न हुआ था, उस वक्त जो रैशनल था वो एग्जिस्ट करता है आज भी, और में से एक रैशनल जो है वो ऑब्वियसली सिक्योरिटी डायलेमा है। अफगान नेशनल्स आर नॉट ऑल ऑफ देम ऑब्वियसली बट अ मेजर पोर्शन ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ are believed to be either Afghans or Afghans residing in Pakistan, चाहे डॉक्यूमेंटेड हो या अनडॉक्यूमेंटेड हो। और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है रिसेंटली बन्नू में होने वाला अटैक जो था उसके अंदर भी हमने देखा। उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के जो यहाँ लोग मौजूद हैं वो जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मैनी अटैक्स। तो स्टेट बिलीव दैट द सेफर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तानी स्टेट इट इज़ इम्पेरेटिव टू रिटर्न दम बैक। दूसरा आर्गूमेंट नाज़रीन दिया जाता है वो पॉलिटिकल है, और वो पॉलिटिकल ये है दैट बहुत सारे जो अफगान नेशनल हैं पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं TTP के साथ या बाकी ग्रुप्स के साथ मिलकर, अफगान गवर्नमेंट बजाय पाकिस्तान को हेल्प करने के इन रिस्पांस टू द फैसिलिटेशन दैट पाकिस्तान गिव्स टू द अफगान रेफ्यूजीज, अफगान स्टेट इंस्टेड सपोर्ट्स पाकिस्तान's enemies. So we support Afghan nationals as refugees here, but they shelter the anti-Pakistan elements, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हो या TTP की सपोर्ट हो। तो पाकिस्तानी स्टेट का आर्गूमेंट ये है, सपोर्टर्स का आर्गूमेंट ये है दैट अफगानिस्तान स्टेट इज़ नॉट रेसिप्रोकेटिंग positively to Pakistan's gesture of hosting millions of refugees for decades. Therefore, because in international politics, generosity is reciprocal, and if they don't help us, why should we give shelter to such elements जो अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है? So that's why we are forcing them to return back to Afghanistan. But there is a third element, that is economics. Now, economic factor जो है वो सबसे important factor ये है, because we believe that those refugees are involved in either smugglings or traffickings, as well as they are burden on the local economy. Although there is a counter argument that refugees also contribute to the economy, but at this point of time जो government का argument है वो ये है that many of those Afghan refugees they are involved in illegal businesses because they are not registered ones, they are not legally allowed to do the businesses, and because they are not registered therefore they don't pay taxes, और एक टैक्स एविजन जो है उसकी एक वजह बन जाती है। फिर लोकल पॉपुलेशन के लिए जो जॉबलेसनेस है वो बढ़ जाती है when Afghan refugees work in Pakistan. So जो इकोनॉमिक बर्डन है उसको भी जो है वो मद्देनजर रखा गया है। सिमिलरली टू होस्ट अफगान रेफ्यूजीज इट टेक्स, अब जैसे 8 लाख लोग रिटर्न हुए, 9 लाख लोग रिटर्न होंगे, 17 लाख लोग जब वापस जाएंगे तो इट मीन्स इट वुड रिड्यूस द बर्डन ऑन हॉस्पिटल्स, ऑन ट्रैफिक, ऑन स्कूल्स in the border regions of Pakistan, particularly in KP and Balochistan. Then there is another element, that is the legality.
Pakistani state is of the opinion that because they are illegal in Pakistan, they don't have registered themselves with the Pakistani state, therefore illegal deportation is something that is the right of Pakistani state, because their residing in Pakistan is itself illegality, and because we have given them the voluntary choice to return back as illegal migrants, therefore we are showing some compassion to them. They have illegally occupied in Pakistan, but we want them to legally go back to the region. We're not forcing them, therefore there's a legal argument as well. As per the law of Pakistan, no illegal entry in Pakistan is permissible. लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन, एक ग्लोबल फैक्टर भी है। नाज़रीन ग्लोबल फैक्टर जो है वो दो तरह से, एक तो जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है हमने देखा कि यूएस एड की जो फंडिंग है वो सिग्निफिकेंटली कटल हुई है, ऑलमोस्ट हाल्ट हो गई है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट ये जो रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में हैं इनको मैनेज करने के, इनकी फूड, इनकी शेल्टर, इनकी हेल्थ, इनकी एजुकेशन, इनको संभालने के लिए जो इंटरनेशनल फंडिंग पाकिस्तान को मिलती थी फ्राम डिफरेंट एजेंसीज़, NGOs, INGOs, UN agencies, that has been significantly curtailed, and therefore it has increased burden in Pakistan. So जो international environment है, that or international limit on global assistance for these kind of people, that has created no other choice for Pakistan but to make them return back to Afghanistan. और इसी सेंस में ग्लोबल एक और फैक्टर भी है नाज़रीन, और वो है पाकिस्तानी जो कि अमेरिकन के अंदर एक सिग्निफिकेंट डिपोर्टेशन मूवमेंट शुरू हुई है। एक कैंपेन है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लीड की है फॉर डिपोर्टिंग दी माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स from United States. So we thought that this is an ample time, taking advantage of it. Our deportation drive is no different from Trump's deportation drive, and therefore we believe that this is the time in which we can prevent and preempt any kind of international scrutiny for Pakistan forcibly deporting illegal migrants from Pakistan, because Americans are doing it themselves. Therefore we are less likely to feel any international pressure. So this is historically जब भी हमने push करने की कोशिश की, there were international pressures, but this time international pressures are खासकर जो US administration है उसकी तरफ से pressure कोई है नहीं पाकिस्तान के ऊपर. This is why we thought that this is an ample time, ample opportunity to do the right thing at this point of time. अब नाज़रीन आते हैं क्रिटिक्स का व्यू क्या है। Obviously, there are many people who are critical of the government drive inside Pakistan. अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी, और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कह चुकी हैं, कुछ गवर्नमेंट्स भी फॉरेन की कह चुकी हैं। दे हैव बीन क्रिटिकल, दे हैव बीन ऑफ द व्यू दैट पाकिस्तान शुड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इट्स नॉट दैट पाकिस्तान इज डूइंग रॉन्ग थिंग, बट on humanitarian grounds, they have requested Pakistan not to force people, illegal migrants, to deport back to Afghanistan. And why they say so? Multiple factors हैं, उनमें से सबसे important factor नाज़रीन वो है जो forcible return है, they consider it as inhuman, and that is a kind of a humanitarian crisis, in the sense that many of those migrants have lived for generations in Pakistan. At least this is the third generation which is living in Pakistan, and therefore, and many of those are the people who have not been to Afghanistan throughout their life. They are born in Pakistan, they are raised in Pakistan, and they have businesses in Pakistan, they have jobs, they have social connections, they have even marriages in Pakistan. Therefore उनको रिटर्न करने का मकसद ये होगा दैट दे आर पुश्ड टू द एलियन टेरिटरी फॉर देम, समथिंग दैट इज डज नॉट कन्फर्म विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स. So therefore they believe that based on humanitarian compassion, Pakistan state must not deport them, at least not at this point of time, and at least not by force. Second argument given by the critics is the fear, इसी के अंदर ह्यूमैनिटेरियन में भी आ जाता है, that is the fear of the persecution by the Afghan Taliban government. Many of those Afghan citizen card holders in Pakistan are the people who fled Afghanistan after the US withdrawal in 2021 and after the Afghan Taliban coming to power in Afghanistan. These are the people who actually either worked for the human rights or for the women rights
or they have been, especially the women who have been playing sports, who have been part of the entertainment industry, are those people who actually collaborated with the allied forces in Afghanistan or the international NGOs in Afghanistan. They fled Afghanistan at that time, fearing that Taliban might take revenge activities against them. They might force the women to abandon their role for the human rights, for the women rights, for the child rights, for education, for NGOs, and those who work for the US are likely to be persecuted by Afghan Taliban, although Afghan Taliban have promised not to do so, but on-ground reports contradict Afghan Taliban claim. Therefore, these people are taking sanctuary in Pakistan, and some of them are those who were actually in a transit because they were brought from Afghanistan to Pakistan and they were supposed to be going to the United States ultimately at a later stage, but Trump administration changed the policy and therefore they are stuck in Pakistan. And if Pakistan runs them back to Afghanistan, there are fears that the Taliban government might persecute them for one reason or another reason. There is also a possibility that they might be target killing of those elements by the extremist groups over there, chahe wo Daesh ho ya baki groups ho. Therefore, it is likely to create a kind of, for some, some of those who interviewed international media, they believe that this is like issuing death warrant for them because they have supported the allied forces in Afghanistan, and therefore Taliban are likely to make them pay for it. There is another argument coming from especially international NGOs and INGOs is that the forced deportation of refugees is illegal under international law, although Pakistan is not signatory to those conventions, but some of the international humanitarian law has to be kept in mind because it is meant to protect the human rights, and the right to protect it gets involved in this case, and therefore when you know that returning those refugees could result in killing of those people or risking their lives over there, is therefore अगर forceful deportation की जाती है, according to many scholars, this might be a violation of the international human rights laws. But there are those critics from within Pakistan particularly who also believe that by forcibly returning these people back to Afghanistan, Pakistan is likely to lose image in the eyes of Afghans as well as in the eyes of the global community, if not Trump administration, but at least American people or the global community. Pakistan will have the opportunity to create soft image, particularly by giving shelter to those who are wanted by Afghan Taliban. In this way, we can get a soft corner in the hearts and minds of those living in Pakistan, and those people who are being threatened by the Afghan Taliban, they can be used by Pakistan to highlight the Afghan Taliban's extremist agenda that not only threatens those refugees' lives, but also is responsible for the increased terrorism in Pakistan. So for many experts, it is generally believed that by not forcibly deporting some of those elements, particularly those that are being threatened by the Afghan Taliban, we can create soft image in Pakistan, not just in Afghanistan's mind, but also in the international community. Last but not the least, Nazreen, Pakistan faces major challenges to Pakistan's internal security, and by deporting those Afghans in Afghanistan, despite the request of Afghan government not to do so, is likely to further deteriorate Pak-Afghan relationship as well as Pakistan's relationship with the international donor agencies that are crucial for Pakistan. Therefore, पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप का, पाकिस्तान इज लाइकली टू लूज वन मेजर लेवरेज ओवर अफगानिस्तान by hosting Afghan refugees in Pakistan, and therefore it is likely to not serve Pakistan's crucial foreign policy interest, particularly vis-a-vis Afghanistan. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं that although this deportation of Afghan refugees has long been considered by Pakistani state, it has long been delayed due to various factors, but now is the time that those refugees and Afghan government as well as the international community must understand Pakistan's rationale. They must be sensitized about Pakistan's position. However, a blanket deportation drive on the part of Pakistani state is also likely to create some major image problems and foreign policy problems in the eyes of Afghans as well as in the eyes of the international community. Therefore, I strongly advise a cautious
not a harsh, a cautious, sensible policy that involves discussions with the internal elements as well as the external actors, चाहे वो international organizations हों या Afghan government हो. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.